because it is the story which has been developed, story of prosecution, that the persons who were carrying the sand on tractor trolley from the front of the house of this corpus, this Jitendra was also having friendship with girl from that side, my lord, and therefore they were asked. These all are the persons, my lord, who are nearest to Jitendra. So to find out as to whether there is some clue and what is the involvement of Jitendra, my lord, the statement of these persons were recorded. On 17/8/2017, my lord, Jitendra was interrogated. And on 20th of August 2017, the statement of Savita Prajapati, who is the sister of Jitendra Prajapati, who is accused in 363, and Gulab Prajapati was recorded. On 20th of August 2017, again Jitendra Prajapati was interrogated because he was denying with the allegations. Then on 28th of August 2017, a statement of one Sunil Raghuvanshi, salesman of Fair Price shop, because it is said, my lord, in the missing report that the girl went for carrying the kerosene from the Fair Price shop, in which Mr. Sunil Raghuvanshi is the salesman. And from there she went missing. So his statements were recorded. He also denied, my lord, he submitted that he has no information. On 30th of August 2017, my lord, the statement of Neelam Chandel, the uncle of that missing girl, were recorded. He also saw no information because the father of the girl says, my lord, that as and when he was absent, because there is no mother and other family members in the family of the present petitioner, therefore he used to leave the girl at the residence of Neelam Chandel, and therefore his statements were also recorded. On 9/9/2017, my lord, in the nearby places, my lord, she was searched. On 27th of September 2017, my lord, Jitendra Prajapati was arrested. Then on 27th of September 2017 itself, my lord, his memo under section 27 was recorded. On 29th of September 2017, search of corpus was made in Ashoknagar because Savita, who is sister of Jitendra, is a resident of Ashoknagar. And it is... what were the facts divulged by Jitendra in his memo under section 27 Evidence Act? He said, my lord, that on earlier, actually, my lord, on 1st of August, from 1st of August, this corpus is missing. Prior to that, on 10th of July, she was taken by the Jitendra, my lord, for one day at the residence of this Savita in Ashoknagar. And it has come on record from various statements recorded under section 161 that the sister and other persons who were enjoying the liquor party, they said that this girl is minor and therefore she returned back on 11th July, and thereafter she has again went missing by 1st of August. Therefore, this he admits, my lord, that on in July she was taken by on 27th. Now on 1st of October 2017, my lord, search was made. Then on 1st of November 2017. Now one question at this stage, my lord. Did he name the persons who were in the party? Yes, my lord. My lord, find out from the memo of Jitendra. Yes. Did you name the persons who were in the party? Ma'am, I'll just call Mr. Bagel, who has... Before you move further... Major part, yes. Before you move further, let us see his statement. Yes.
आरोपी ने पुलिस अभिरक्षा में पूछताछ करने पर बताया कि 1 साल से मैं बुद्धू बुद्धू कुमार आरोन वाले के ट्रैक्टर पर ड्राइवरी करता हूँ। बजरी तथा मिट्टी। Where is the original diary? You read out. Can you read it? Is it legible? With some difficulty I can read. No, we don't. आरोन जाता था, ग्राम सिरसी रास्ते में मिलता है। रोजाना ट्रैक्टर से हैंडपंप के पास सड़क किनारे खड़ा करके नीलम चिड़ार की गुमटी, ये नीलम चिड़ार अंकल है लड़की का, गुमटी से बीड़ी का बिंडल खरीदता था। उस समय गीताबाई, एक और प्रोसेसर, मुझे हर रोज वहीं गुमटी के पास मिल जाती थी, जिससे मेरी बातचीत होती रहती थी। गीता से मेरी दोस्ती हो गई थी। ट्रैक्टर पर बैठकर आरोन आती रहती थी। दिनांक 1/8/2017 को गीताबाई को मैं सिरसी से अपने घर लाया था। गीता मुझसे शादी करने को तैयार थी। रात के समय मेरे घर पर कभी भी घर पर अकेला रहता हूँ। सुबह उठकर कभी भी नहीं, घर पर रुकी थी। That's why I'm saying it's safe to read the original diary, Mr. Raghuvanshi. Sir. You may slip somewhere. Sir, I love you. घर पर रुकी थी, घर पर अकेला रहता हूँ। सुबह उठकर गीता अपने घर ग्राम सिरसी की कहकर चली गई थी। So where from you gathered the information that she was found in the party? No, it is prior to 1st of August. On Yes, 10th yes. of July. This statement is recorded prior to 1st of August, I believe. No, it is after 1st of August. All right. Before that, Sir, it is of you have also given September. in the list of dates. Be Sir. careful on this. Sir. In list of dates, you have said that in the month of July, Sir. Jitendra had taken her to her sister Sabita. So there are statements, I'll just point out those statements. You better call for the original diary. ये वाली बात तब से आई लॉर्ड साहब, जब ये रिमांड पे लेके जब बेल आउट हो गया, इसके बाद ये स्टोरी डेवलप किया कि मैं 10 जुलाई को लेके गया था। No, we'll come to that also. I'll adjust. Have they not brought the original case diary? Well, I know. Probably they are not in habit of bringing files to the court. Actually, they are overburdened in police stations. I hope they have not brought files of other cases also here. This is the kind of directions they have, instructions they have to attend the court hearing. That's why I say there is a lack of work culture. They are not in the habit of preparing the diaries. It's done by the constables usually. And the SHO naturally is the boss of the police station. So far, why should he care for such kind of... I have gone through the Malord. His job is only to... 130 statements under section 161 have been. Huh? About 130 statements of 161 has been. Mr. Counsel, we are not impressed with such kind of statements. Sir. See, even the last hearing I had told you, sir, you may fill up your diary to an empty number of pages to justify so-called action taken by you. But what actually matters is, what is the final outcome? Till now, my lord, very fairly speaking, my lord... Imagine, it's over 5 years. Till now, you have not been able to lay your hands over such material or breakthrough situations to either nab the culprit or recover the victim.
whose statement was recorded in the month of July, जुलाई का नहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ सर then जुलाई का where तो from बताती नहीं where from you gather the information regarding party? later on my lord during the course of investigation in that particular case I want to know whether in whose statement the factum of party surfaced. हाँ वो सविता के घर में पार्टी वो 6/3/2018 का है। हाँ Is he a constable or what is status? एडिशनल एसपी साजापुर में Sajapur man has come with Guna diary. no because he was the in charge of SIT so therefore he has When? he was in charge my lord between I just 29/8/19 से लेके 29/8/19 2019 से So have you brought all those SIT members here who were members of the 3 SITs? हाँ चार Now, first you call the man who took up the matter for investigation 17. 17 Where is that man? मिस्टर अभय प्रताप सिंह Call him. Just now you have said you have called all the members of the 3 SITs who have manned the team since 17 up to 20. हाँ So who was the first person who took up the investigation? first ballot was done by फर्स्ट है अनुराग पांडे लॉर्ड एसडीओपी राधोगढ़ फर्स्ट एसआईटी And who is that man who was again transferred there? अभय प्रताप सिंह अभय प्रताप सिंह Is he available today? थाना इंचार्ज से टीआई This is the person. Yes, yes. You are a competent officer. Your help was expected to be given to your associate who was at that time manning the investigation. I'll talk to you later. Mr. Abhay Pratap saying, don't cross your limits. I have not called you for interrogation. You have to assist the court and don't try to oversmart. Your senior officers are sitting here. Your conduct is reprehensible, not only in the court, but also in the past, as transpired in the last date of hearing. We will come to that also. What role have you played in this matter? And how questionable your conduct has been in the past? We will let you know. Wait for your chance. Sit down. You started the story from 17. I just want to know when the fact of party surfaced. March? In whose statement? Now, when did you file challan against Jitendra in the court? दिसंबर 2017 17. Now, what were the materials collected by you against Jitendra in that case, in that challan? nothing Except his statement under 27 memo. yes What more was there nothing to prosecute him? Who is Vidya Bhai? Who are these persons? What have they said? Did they see Jitendra with the missing corpus last? Have any of them made a statement that she was last seen with Jitendra?
Then what was the relevance of their statements to justify prosecution of Jitendra? Any other material did you collect to prosecute Jitendra? This is precisely what I had told Justice Mr. Verma on the last date. This is the quality of investigation you have. Look at the predicament of the lamented father. He lodges a complaint of missing girl, 11 years missing girl. 17 also, 16, 17. 17 years. Yes. Sorry for that. More than 17 years. The complaint is filed when? 3 अगस्त 2000. 3rd of August yes. 2017. FIR रजिस्टर्ड हुई है 9 अगस्त को. Now you are recording the statements of persons in July. ये जो इतने स्टोरी बताइए. FIR is lodged on 3rd of August. 9 August. 3rd of August. Complaint filed by me. But you had given a complaint on which date? ये 3 तारीख को थाने पे लॉस. 3rd को. Yes. And the statements are recorded from July. 9 August. This statement came of Savita on which date? सविता का स्टेटमेंट तो है ही नहीं सर इसमें. Mr. Raghuvanshi, it appears you have not been briefed fully. Though they have handed over your chart, but that chart doesn't speaks of the facts. Have you seen one fact? This complaint is of 3rd of August 2017. You registered it on 9th of August. All right. 9th of August 17. Assume that it was on 9th of August. Now please tell me, when did you record the statement of Jitendra? And this fact of his complacency, when did you arrest him? September. Yes, sir. 3rd of August. Then 9th of August is the FIR. And you have arrested Jitendra on 23rd of September. 27. So when did you officially arrested him? 27 November. Officially you arrested him on 27th of September. यही मजाक हुई है सर इस केस में कि एक्यूज पर बाय नेम्ड एफआईआर है, एक्यूज थाने में है और अरेस्ट नहीं कर रहे उसको. एक्यूज थाने में है, लोग से इनकी एसपी साहब की रिपोर्ट है. Just a minute, let him also speak something which he also has facts. Let him divulge the facts and you face the facts. In all fairness, the facts must surface. Yes. Yes, you please carry on. ये इन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है
केवल कंप्लायंस रिपोर्ट देखें लॉर्डशिप, ये है 27 फरवरी 2018 की जो एसपी गुना द्वारा पेश की गई लॉर्डशिप। 27 फरवरी 2018। तो इससे पहले ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर था कि आप एसएचओ महोदय के विरुद्ध में इंक्वायरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। Just a minute. Let us see that order also. Which order? By which the court directed for inquiry? यह ऑर्डर डेटेड 19 फरवरी 2018। ऑनरेबल जस्टिस अग्रवाल साहब का ऑर्डर। Yes. Please read that order. Yes, sir. Shri Dixit submit that respondent number 4 whom there is an allegation accusing the petitioner daughter was taken into custody of he is kept in the custody for the over a period of 3 months, but there is about the petitioner daughter could not be found. Rendered consent. Just a minute. This statement is given on 9 to 18. Shri Dixit submits that respondent number 4 on whom there is an allegation of abducting petitioner's daughter was taken in custody and he was kept in custody for over a period of 3 months. Yes. But whereabouts of the petitioner's daughter could not be found out. Let counsel the petitioner on the other hand submits that he has specifically mentioned in his complaint to the Superintendent of Police that concerned SHO had brought the boy respondent number 4 to him and had made an offer for compromising the matters, saying that the petitioner agrees to marry his daughter with respondent number 4. And thereafter there is no report to show what investigation has been carried out against him by the SHO, police station around District Guna. There is no document on record showing any interrogation against point number 4 and 5 in this regard. There is no report of Superintendent of Police on record to show what action has been taken against the concerned SHO on the complaint of the petitioner. The Superintendent of Police Guna is directed to bring on record the interrogation which has been made against the concerned SHO, police station around District Guna, and the report of such interrogation and under which capacity he was authorized to the deal between the parties to act as a broker and strike a deal between the petitioner and the private respondents vis-a-vis minor daughter of the petitioner. Let this report be filed by SP Guna within 7 days and is directed that the Superintendent of Police Guna shall remain personally present on the next date to answer as to if respondent number 4 was in custody for a period of 4 months, then why no statements are on record, and when he was under the custody, what steps have been taken by the Superintendent of Police to monitor the investigation done by his subordinates in view of such serious allegations in this petition. This is the order, Mr. Raghuvanshi, of my Lord Justice Agarwal. List this case so and so. What happened thereafter? March 18. क्या पेश किया आपने? What is the report? सर ये 27/2 की ही रिपोर्ट है। ये ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। चलिए पूरा केस क्लियर हो जाए। लाइए। Kindness. Let us see the report. पेज 24 पे है लोग डॉक्यूमेंट A2। पेज नंबर 24। 24। एसपी कार्यालय गुना द्वारा भेजा गया है। Just. Yes, so this has been from SP Police Guna, SP Guna to the government advocate. Yes. ये जो लेक्चर इन्होंने पास किया इसमें लोग डेट वाइज है, यहीं से केस का क्लू है लोग, और यही कारण है कि 3 एसआईटी जो गठित हुई और भंग हुई वो केवल इसी में है सर। मैं ये 25 पेज से देखा सर जहाँ से एफआईआर हुई है सर। बताएं। ये है लोग 19/8/2017
9/8/17 दिनांक फरियादी को चंदन 100 ग्राम से गुना रिपोर्ट अपनी नाबालिग लड़की गीताबाई के अपहरण की रिपोर्ट अज्ञात आरोपी संदेह जितेंद्र के विरुद्ध कराई गई थी, जिस पर से थाना आरोन में अपराध क्रमांक इतने धारा इतने के अंतर्गत प्रतिवेदन विवेचना किया गया। दिनांक को अपहृता की गुप्तशती रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना उप निरीक्षक सुल्तान सिंह रावत फरियादी गजन सिंह मोजीलाल के कथन लिपिबद्ध करके गीताबाई की अनुसूची छायाप्रति प्राप्त की गई। अब सर सेकंड डेट आती है 12/8/2017। इस दिनांक को विवेचना के क्रम में ग्राम पहुंचकर घटनास्थल पर बनाया गया। आसपास के ग्रामीण अभिषेक रघुवंशी, रविंद्र रघुवंशी, गोपाल श्रीवास्तव से पूछताछ की गई। अपराध में सादर संदेह जितेंद्र प्रजापति से पूछा। सर ये जितेंद्र यहाँ 12 तारीख को कोतवाली में हाजिर, 12 अगस्त को हाजिर थे और नेम्ड FIR थी इसके अगेंस्ट। और इसके बाद इनको छोड़ दिया गया। एक मिनट आगे बढ़िए ना। भारत जो पूछताछ गई जिसने घटना के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की, इसी दिनांक को अनुभव राधोगढ़ द्वारा पर्यवेक्षण कर दर्याप्ती बाबत निर्देश जारी किए गए। फिर है 17 अगस्त 2017। इस दिनांक को अमृता गीताबाई को परतासी कस्बे आरोन ग्राम सिरसी में किया गया। पता नहीं चला संदेही जितेंद्र, ये अगेन लॉर्ड प्रजापति को पुनः तलब किया गया। संदेही ने जुर्म से इनकार किया। संदेही जितेंद्र प्रजापति द्वारा कस्बा आरोन में दुर्गा एरबार पर शक जाहिर किया और तलाश करने पर घर पर नहीं मिला। फिर लॉर्ड से 20 तारीख को दिनांक को अमृता गीताबाई के तलाश हेतु अशोकनगर पहुंचकर जितेंद्र प्रजापति की बहन सविताबाई के घर के तलाश की गई। सविताबाई होना नहीं पाया गया। सविताबाई पति गुलाब प्रजापति स्वयं से पृथक बयान लिए गए। अमृता गीताबाई के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। अमृता गीताबाई के अशोकनगर संभावित स्थान पर कोई भी पता नहीं चला। फिर 21 अगस्त को दिनांक इतने को फरियादी गजेंद्र के कथन लिए गए। गीताबाई दिनांक इतने को राशन की दुकान पर गई थी, लौट कर नहीं आई और आदेश किया गया। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फैला फुसला कर ले गया। संदेही जितेंद्र प्रजापति के कथन लिए गए। यहाँ भी कथन यानी तीसरी डेट पे भी जितेंद्र प्रजापति थाने में उपस्थित थे। फिर 28 अगस्त 2017 इस दिनांक को भी ग्राम सिरसी में अमृता गीताबाई की तलाश की गई जो नहीं मिली। अमृता गीताबाई के संबंध में कंट्रोल की दुकान पर राशन वितरण करने वाले सेल्समैन सुनील रघुवंशी और हनुमान सिंह रघुवंशी के नाम से पूछताछ की गई। जानकारी नहीं होना बताया। प्रकरण में संदेही जितेंद्र प्रजापति से पुनः पूछताछ की गई, जानकारी नहीं हुई। यानी चौथी बार जितेंद्र थाने में रहे पर इन्होंने अरेस्ट नहीं किया सर। फिर 30 अगस्त को देखा सर दिनांक कितने को साक्षी नीलम चौहान ने पूछताछ की गई, कथन लिखित किए। इसी तारतम्य में जितेंद्र से पुनः पूछताछ की गई, यानी 5वीं बार आया जितेंद्र थाने पे। फिर 9 को दिनांक को गजेंद्र चंदेल यानी पिटिशनर और जितेंद्र पर शक जाहिर किया, वो आया। फिर 27/9 को इन्होंने उसको अरेस्ट किया। सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 9 अगस्त से लेके 1.5 महीने तक ये कंटिन्यू थाने पे आए, कोई एविडेंस नहीं है। फिर क्यों अरेस्ट किया उसको, जबकि मैं नेम्ड FIR की उसकी, और इसको कोई अपराधी ये कहेगा कि मैंने अपराध किया है थाने में आके, ये हमेशा पूछते और पूछ के उसको छोड़ देते। और जहां तक ये कह रहे हैं कि उसमें सविताबाई भी कोई एक्यूज है, कहीं है ही नहीं। सविताबाई के अगेंस्ट मैंने एलिगेशन लगाए, नंबर 5 बनाया, लेकिन वो कभी है नहीं। इस साल 29 तारीख तक कोई भी एविडेंस अगेंस्ट जितेंद्र ये कलेक्ट नहीं कर पाए, केवल 27 के मेमो। तो 27 का मेमो तो 12 तारीख को पहले दिन ही हो जाता था। They were gaining time to justify the delay cost. 1.5 महीना केवल इन्होंने एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसको दिया है सर। केवल 1.5 महीना उसको इसलिए दिया कि वो एविडेंस जो भी है वो डिस्ट्रॉय कर दे। इसके बाद वो अब सर आगे की स्टोरी देखे सर। अब यहाँ पे ये जैसे 27/9 को अरेस्ट हुए, 27/9 से 1/10 तक के लिए इनको रिमांड पे लिया गया सर। And matter was pending in the High Court. नहीं सर, मैं 11वें महीने में आया हूँ। अच्छा नवंबर में जब 1/10 को इनको रिमांड पे यानी 4 दिन के लिए रिमांड पे लिया गया, और रिमांड में इन्होंने कितनी अच्छी जांच की वो देखे सर। 28/9 जस्ट a minute 28/9। अच्छा रिमांड मिली इनको? यस सर, पुलिस रिमांड मिली इनको 1/10/17 नहीं 27/9 से 1/10/17 तक। सर 28 को इनका इंट्रोगेशन शुरू हुआ। दिनांक कितने को आरोपी प्रजापति सविताबाई के निवास घर पर तलाशी की गई, जानकारी ली, मकान पर ताला लगा हुआ पाया। पहली डेट सर। अब दूसरी 29 तारीख को पुनः जितेंद्र को लेके गए। सविताबाई अशोकनगर के घर की तलाशी ली गई, मकान में ताला लगा हुआ पाना गया। फिर 30 तारीख सर,
30 तारीख को पुनः जितेंद्र को पूछताछ की गई, अपहृता के पास होने से इनकार किया, अशोकनगर में पड़ताल की जाएगी और 1 तारीख को इनका पुलिस रिमांड खत्म और इन्वेस्टिगेशन यहीं पे क्लोज। चालान इसी स्टेज पे पहुंच किया गया कोर्ट में कि ये चालान इसी स्टेज पे पहुंच गया कि इनके विरुद्ध में इंक्वायरी पूरी हो गई है और ये चालान पेश। इसके बाद लॉर्डशिप जो भी 178(3) या 73(8) के अंतर्गत ये बता रहे हैं कि सप्लीमेंट्री चालान वो उसके इसके विरुद्ध की नहीं। जब इसके विरुद्ध तो कोर्ट में ट्रायल कोर्ट में इन्होंने चालान पेश किया ये कहते हुए कि इनके विरुद्ध इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया और इन्वेस्टिगेशन कुछ हुए नहीं, क्योंकि जिस जगह ये गए तलाशी कर रहे वहां वो मिली ही नहीं, बहन ही नहीं मिली, उसकी एविडेंस कहां से कलेक्ट करती है और कहीं ये गए नहीं, रिमांड पे ही नहीं लिया उसको। सर जब तक नेम्ड FIR है वो बंदा खुद कह रहा है कि मैं लेके गया हूं, उसके बावजूद ये रिकवर नहीं करवा रहे, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। और फिर चालान पेश कर दिया। इसके बाद जो दिसंबर में चालान पेश किया, लेकिन जितेंद्र के विरुद्ध इंक्वायरी यहाँ PR खत्म, जितेंद्र जेल चला गया, जितेंद्र के विरुद्ध कोई इंक्वायरी नहीं, जितेंद्र के साथ में ले जाके कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ। तो ये सर 3 डेट से ये क्लियर है कि जो इन्होंने PR लिया है वो PR केवल फॉर्मल लिया है और ये एलिगेशन मैंने SP साहब को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, इवन IG साहब को, सभी को लिख के तुम्हें दिया कि ये थाना इंचार्ज जो है उनका और एक्यूज का संधि है और ये एविडेंस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उस वक्त कौन थाना का इंचार्ज था? वो अभय प्रताप सिंह। अभय प्रताप सिंह। यस सर। अब जब ये एलिगेशन मैंने लगाए लोग, you please take note of these facts, the relevant facts which I expect you to address on. इसके बाद जो भी ये बोल रहे हैं कि वो पार्टी वाली बात आ रही है, सब जब वो जेल पे छूट गया, बेल आउट हो गया, इसके बाद 3-4 अलग अलग एविडेंस, सर इसको भी देख लें। अब सर ये जो बात कह रहे थे वो नेक्स्ट कंप्लायंस रिपोर्ट है, कंप्लायंस ऑर्डर है, वो रिपोर्ट है 19/3/2018। 19/3/2018। हाँ 18/3/18 की था। इसका रिलेवेंट पेज है डॉक्टर, पेज नंबर 56। ये पैरावाई कमेंट्स इन्होंने दिया, कोर्ट में पूछा था इस दौरान डॉक्टर जस्टिस अग्रवाल साहब का ऑर्डर हुआ, क्या इंक्वायरी हुई, फिर इन्होंने चालान पेश किया तो जस्टिस अग्रवाल। एक मिनट, एक सवाल यहाँ पे है, अग्रवाल साहब के ऑर्डर के बाद इन्होंने कोई इंक्वायरी शुरू खिलाफ करी? इन्होंने हाँ की थी सर, की थी, वो फॉर्मल इंक्वायरी की थी गजेंद्र से, अभय प्रताप सिंह से और थाने में जो दरोगाजी थे उनसे पूछताछ की और ये पाया गया कि कोई अपराध नहीं था। एक मिनट, वो रिपोर्ट सबमिट करी उन्होंने? इसी के साथ इसी रिपोर्ट पे है? यस जो मैं 19/3 को बता रहा हूँ। हाँ उसमें वो रिपोर्ट दिखा दीजिए हमें आप। Who was SP at that time? Mr. Nimish Agarwal. Nimish Agarwal. Yes. Where is he posted now? On which post? He is SP Crimes, ACP Crimes, DCP Crimes. Nimish Agarwal. Where is the report? ये डॉक्टर पेज नंबर 8 पे है, 20 तारीख की जो कंप्लेंट है 26 Now this report is prepared by whom? अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हो रहा है। But the court had ordered the SP to hold an inquiry. Yes. Where is the SP's report? Mr. Raghuvanshi, have you seen the order of Minor Justice Agarwal? The order is very specific now. The SP must hold an inquiry against the SHO. Is there an inquiry against SHO by the SP in compliance of High Court order? Because the instant compliance report is in purported compliance of the High Court order. So let us see how much respect have you given to the High Court order in terms of compliance.
Page number 14. Just a minute. 19 to 18, right? Mr. Counsel, say that there is no inquiry done by SP Guna in compliance of the court order of 19 to 18. This is the arrogance. This is what disturbs us. Despite court order, your SP has conducted himself in a manner unbecoming of a public officer. If these officers do not have respect for the court orders, what kind of fairness I can expect from them in the matter of investigation and discharge of their duties? Tell me one thing. If this man is so arrogant that he remains indifferent to the High Court order and asks an additional SP to prepare a report which runs into 10 pages, which has no meaning. And he has the audacity to come to the court and say that this is the compliance. There is no remorse. Because he is SP. Because you are an IPS officer, posted as SP, you are above the law. You are above court orders. You can afford to remain indifferent to the High Court order. And you opened up your argument trying to show the bona fides of the police. Mr. Counsel, we are not concerned. See, it's a matter of habeas corpus. No, ultimately we have to see your bona fides. And in all fairness, your instruction should have been, if there is any lapse, no, don't argue the lapse. You have to, Mr. Counsel, all said and done, before that, and all right, then, yes, very well. Now you have started from July 17. Now, probably you will take the whole day. No, since you started from July, now look at, answer these questions which the Learned Counsel for Petition has raised and the court has raised. Despite 5 chances, you have not apprehended, you have called Jitendra at police station, allegedly recorded his statements. Those statements are not on record. 5 times in the month of August. And after taking police remand, you have taken him for a walk to his sister's house, found a lock, came back. This is the kind of investigation you have done. And this allegation against SHO. They was trying to strike a deal between Jitendra and the father of the missing corpus, that on which court had taken exception, because the counsel, while filing an affidavit, had taken due care of the factual narrations. There is no denial of that fact, and that's why the court has taken a strong exception to the conduct of the SHO. And for that reason, the SP was required to hold an inquiry.
And that was not done. And that was not done on either situations, on either fronts rather. Neither there is an inquiry by the SP, nor there is satisfactory investigation. I mean, these persons who are alleged to be a member of SIT, probably because of their experience in police services, whosoever was there, and this is the quality of investigation you have done. No, you can smile it away, because naturally you are defending the government, so you have to smile it away. But we are taking on serious note. Mr. Counsel, you have to be very serious. And this is one case. Mr. Counsel, this is one case where we could lay our hand, this man could gather courage to come to the High Court. Otherwise, poor persons like the petitioner can only lament, because neither he has money power, nor he has political power or muscle power. And this man can only lament, but for the court's intervention. And there would be hundreds of thousands of such cases across the state, and no wonder in India itself, in entire India, different states, where such kind of grievances go unheard. There's only one case which has come before this court of this nature. There would be thousands of cases of this nature. That is why on that day I said that nowadays investigation only comes to full stop after recording police statement of the accused. I don't know in which era these police officers are living. English rulers have gone. That fear psychosis is no more there among the criminals. You have to rise to the occasion. Change your way of investigations. Adapt to the contemporary phase of investigation. You are sticking to Danda investigation. Beating the accused or innocent, whosoever you nab, black and blue, and then ensure divulging of facts of your convenience. This is the quality of investigation you have. And look at the daredevilness of the SP that he filed such kind of report, which expressly shows what kind of investigation has taken place. This is the situation. Why should we not haul up this SP as for contempt? See, we have been giving you enough long rope so that you people are not put to any embarrassment. But when things cross a certain level, it is difficult for us to protect you. It's a case of not only human rights, but also that of a quality of life and liberty, which every citizen of this country is expected to enjoy. You being police officer is expected to address the problems of the public at large. You are meant for it. You cannot segregate. He's a poor man, let him be there.
some big persons, high profile persons of different avocations. If there is a complaint, you all stand up and ensure that there is no lapse in the matter of investigation of such complaints. But as against that, if there is a poor person, this is the quality of investigation. This is an example. How you would treat a poor man. Is he not a citizen of India? Is he not a citizen of India? Is there any difference between him and me except the constitutional authority we have? That's all. We all are human beings. We all are citizens. The problem is because you see, the problem is not with SP. Problem is with the psyche. What happens is, once you adorn a chair of authority, be it executive authority or for that matter judicial authority, and you get attached to that authority, all problem starts. Because you identify yourself with the chair. You forget that who you are and what is the obligation upon you while you adorn the chair, either of justice or that of executive. Unless you adorn the chair with sense of detachment and be committed to your conviction to perform your duty, you can never rise to the occasion and may ensure proper discharge of duty. Somewhere you will be falling in the trap which you yourself lay in the context of subjectivity in your actions. You can only attain objectivity in your actions if you have a sense of detachment. This is what is required of all public authorities while they are trusted with the powers in public domain. If you don't do that, you definitely get somewhere embarrassed or exposed because your activities shall always be ruled by your sense of subjectivity. Because you would decide yourself what is right, what is wrong. And for you, rule of law is nothing but a few letters in the Constitution of India. And this is the outcome. High Court passes the order, hold an inquiry, SP is unmindful of the sensitivity of the order, the mandate of the order, and says, additional SP, prepare it, send it. No wonder this report is not signed by him. Who has signed this report? Look at it. Even he didn't have a courtesy to sign the report. This is a state of affairs. Mr. Verma, that is why on that day I told you, you please look into these things. You are a senior officer, recently you have come to Gwalior. Nothing boils down to your actions, as a matter of fact. You were not here when all these things happened. But look at these officers. And these office persons who are below your SP rank officers. They conduct, you're seeing it. See all these facts. Will it not disturb us? And you want to justify that since August 17 we are doing all this. It's total farce. There has not been any sincere efforts. And Mr. Verma, I expect you
You please come in the front. You are a sincere, honest, upright officer. This is the understanding we have. And I expect you that you ensure to take serious action against all such erring officials who were involved in this case. And let it be an example for all the officers in the state as to what are they supposed to do, how they are supposed to behave, and how are they supposed to conduct themselves in public domain. Mr. Verma, it's not a case of issuing charge sheet. It's a matter of changing their mindset. Don't create fear, but there should be deterrent steps. All these, what I'm saying is, it should come in their routine discharge of duties. The mindset should be such that I am a public servant. Mindset should be that I am a public servant. I should not forget I am a human being. I must treat others also as a good human being. And God has given you this chance to maintain law and order and public order. Discharge this duty, ensuring good to the public at large, protecting them against invasion of their life and liberty and property, not to exploit them, not to torture them, not to embarrass them, not to deprive them. This is the duty of a police officer. People should not have a fear psychosis because they are going to police station. They should be protected. They should be extended helping hand. This is what is expected of you people. You take oath also, I believe. You take oath once you qualify IPS. Why should you not imbibe that culture which a person after taking oath is supposed to have? You forget everything once you are posted as SP. I don't want to comment upon your status as SP, but I can always comment upon the way you have conducted yourself as SP, which is unbecoming of a public servant. See, if a person cannot justify the obligations which he owes towards public while holding the post, does he qualify himself to hold that post? If we, while sitting on this seat of justice, are not able to impart justice or reach out to the expectations of people at large, who have reposed faith and trust upon us, if there is a smell of some kind of a bias, partisan, or favoritism, we would be also falling in the domain of vulnerability. We will also be vulnerable in public domain. The consciousness has to be there when you hold the post. The same thing goes with you also. We really very feel sorry with this kind of a state of affairs, and ensure that no one is spared. And all those persons who are attached, who are connected to these cases, they are taken for task. And I want to reach to a logical end where the girl is. You have to galvanize all this machinery which is under your jurisdiction to ensure that this, whether she is living or she is dead, whatever it is, but you must reach to a logical conclusion. We record total dissatisfaction over the state of affairs, particularly in this district Guna. Mr. SP,
Now in a month's time you have come here. For a month you are here only. What I have said just now, have you heard it? Ensure that the work culture revives in your district. And Mr. Verma, you also ensure that in the entire Chambal and Gwalior division, things do not happen the way it is happened in this case. I will keep it pending. And now you come, now you sit down. Mr. Raghuvanshi, now let me know what steps you're supposed to take now. Because so far it's all as trash, I should say. We should not get into this trash. Remove this file. Now you tell me what steps you want to take now. And now, just a minute. That SHO Akhand Pratap Singh, na? Yes, sir. He's the person. Abhay Pratap Singh. Abhay Pratap Singh. Yes. Call him here. क्या नाम है इसका? Abhay Pratap. कब से नौकरी कर रहे हो तुम? अभी कितनी नौकरी बाकी है तुम्हारी? माइक पे बोलो। 10 साल की सर। बाकी है ना? जी। क्या जितनी नौकरी कर चुके हो इसी प्रकार से करिए नौकरी तुमने? बहुत दिन ये 3 फुट रह नहीं पाएंगे। हमने आपके बड़े ऑफिसर को बोल दिया है। ये जो हरकत करी है आपने इस केस में, ये किसी प्रकार से जस्टिफाई नहीं की जा सकती है। 15-15, 20-20 साल की सर्विस करने के बाद ये हालत है आपकी क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन का। और यही अमूल सब केस में करते होगे जब तक कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होता होगा। आज तुम्हारी लड़की गायब हुई होती तुम क्या करते? कॉम्प्रोमाइज करवाते? मैंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। क्यों नहीं इंक्वायरी हुई तुम्हारे खिलाफ? हुई सर इंक्वायरी। कुछ नहीं हुई तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी? 2 बार हुई सर इंक्वायरी सर। वही एडिशनल एसपी ने करी? नहीं सर, एक बार डिपार्टमेंटल इंक्वायरी मिली है। वो इंक्वायरी में क्या हुआ होगा आप लोगों को पता है? एक इंक्रीमेंट। इस प्रकार के तुम बिहेव करोगे पुलिस स्टेशन पे, दिस रिमाइंड्स अस ऑफ such situation which usually we see in movies. वो पुलिस थाना तो शायद आप ही ओन करते हैं। जी सर। है ना? नहीं सर, मैं उस समय पदस्थ था सर जब। नहीं आप लीजिए, आप वहां के बॉस हैं, सबसे बड़े अधिकारी पुलिस थाने के आप। उस समय पोस्टेड था सर, मैंने तत्काल एफआईआर कराई थी सर। ज्यादा बोलोगे तो और तकलीफ में जाओगे, क्योंकि तुम्हारा कंडक्ट रिकॉर्ड में दिख रहा है हमको। अब वो तो तुम्हारे एसपी और तुम्हारे आईजी साहब या डीजी साहब डील करेंगे तुमसे। अब ये मैटर पेंडिंग रहेगा अभी यहाँ पर। लेकिन अपनी हरकतें सुधार लो, नहीं वाकई तकलीफ में आ जाओगे तुम। अगर हमने दोबारा सुना कि तुमने इस तरह की हरकतें करी हैं, तो शायद हम ही तुमको यहां से ऐसा ऑब्जर्वेशन दे देंगे कि पुलिस फोर्स को तुमको नौकरी शायद निकालना पड़ जाए। क्योंकि अगर एक पुलिस ऑफिसर कल्प्रिट के साथ बैठ करके और विक्टिम के फादर के साथ डील नेगोशिएट करने का एलिगेशन ही आ रहा है, अगर यही बहुत ज्यादा है। 5-5 बार तुम जीटीएन को बुला के थाने में बैठाते हो और उसके बाद बोलते हो कि ताला लगा मिला हमको। तुम्हारे जैसे लोग तो पुलिस फोर्स में को बदनाम ही करते हैं। हमने लिखा है, आप इसी केस के ऑर्डर में लिखा है, इन्हीं सिचुएशंस की वजह से मैंने लिखा है ऑर्डर में, देयर इज नो वन टू पुलिस द पुलिसमैन। कारण यही है कि आप किसी के कंट्रोल में नहीं हो, क्योंकि आप बादशाह हो,
थाने के बादशाह हो आप तो, और कुछ होगा तो साहब से विनती कर लेंगे, एक इंक्रीमेंट रुक जाएगा और क्या होगा, वही हुआ। और ऐसी तुमने कितनी हरकतें करी होंगी जो अननोटिस कहीं होंगी अभी तक, और तुम्हारे जैसे कितने और होंगे वहां पर। We will deal with you later. But at इंटायर चालान में केवल 27 के मेमो के अलावा कुछ है ही नहीं सर, कुछ है ही नहीं केस, केवल 27 के मेमो। और किसी की लड़की गायब हो गई है, 4 साल से 5 साल से गायब है, आज की तारीख में तो 7 साल हो गए, तो 5 साल हो गए, 5 साल हो गए, जिंदा है मर गई है कहाँ है किसी को पता ही नहीं। सर आज जो सब्सिक्वेंट रिपोर्ट पेश की है, कंप्लायंस रिपोर्ट, वहाँ नया डेवलपमेंट हो गया। लॉर्डशिप ने डायरेक्शन दिया था कि सोनू के विरुद्ध आपने क्या कार्रवाई की जब उसने एडमिट किया है कि मैंने मर्डर कर दिया। रिपोर्ट ये आई है कि वो इनोसेंट है, उसके विरुद्ध हम कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि वो गलत फंसाया गया। अब सर रिपोर्ट इनने पेश किया, मैंने थोड़ी पेश किया सर। ये रिपोर्ट कहाँ जो इन्होंने आज कंप्लायंस रिपोर्ट पेश की है सर, देखिए दिखाइए वो। कलावत के विरुद्ध लॉर्डशिप ने डायरेक्शन दिया था। आज फिर वहां सचिव कौन है, इसको दोबारा कब पोस्ट किया वहां पे? 2019 में। नहीं सर मैं पोस्ट नहीं हुआ सर, कब पहुंचे ये तो बता दो। गुना पहुंचे कब तुम? मैं सर जून 2019 जुलाई 2019 में गुना आया था सर। कब तक रहे यहाँ? मैं जून में आया था सर, और लगभग मैं सर 8 महीने रहा सर। मुझे 2 महीने में सर ट्रैफिक में रहा, बाकी सर मैं इसमें पुलिस लाइन। तुमसे जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। अभी तो डांट खा गए हो, पीछे बैठाया था तुमको मैंने। ज्यादा सफाई दोगे तो और प्रॉब्लम फंस जाओगे तुम। तुम्हें गुना भेजा कब गया? 2019 में। शांत हो जाओ। हाँ बताओ तुम क्या, इन्होंने क्या क्या किया उसमें? नहीं सर मैं शट अप। सर जब कंप्लायंस रिपोर्ट पेश की थी इन्होंने 2019, उस रिपोर्ट में लॉर्ड से एक स्टेटमेंट था सोनू कलावत का 2000 ये पेश किया 6/3/2020 को। दिखाना भाई। बल्कि रिपोर्ट पोस्ट होती है। इस रिपोर्ट के साथ में लॉर्ड से डायरेक्टर ये बन है पेज नंबर 10 ट्रीटमेंट ऑफ सोनू कथन। हाँ इसने कहा है कि मैं ले गया था, मैंने रेप किया, इसके बाद मर्डर करके मैंने तालाब में फेंक दिया। तो उन्होंने कहा है रेप किया, मर्डर किया और तालाब में फेंक दिया। ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड किसने किया है? मिस्टर रघुवंशी सर। Who was SHO on 18/11/19? Who was the SHO and SP? SIT के है बघेल साहब से। कौन है बघेल? ये क्या है, एडिशनल SP है? हाँ सामने आओ। ये स्टेटमेंट तुमने रिकॉर्ड किया है? फिर क्या हुआ इसके बाद? सर स्टेटमेंट की जो तथ्य बताएं, ये बात लिखी है ना इसमें कि उसने फैक्ट कहा कि मैंने उस लड़की का रेप किया, मर्डर किया और नाले में बहा दिया, तालाब में बहा दिया। ये लिखा है ना इसमें? लिखा है ना 27 के मेमो में। हाँ इसके बाद क्या किया आपने? सर सोनू कलावत द्वारा जो तथ्य बताएं कि तस्दीक हमने सबसे पहले की है सर कि जो स्थान बताया वहाँ पर जाके पूरी टीम तलाश की, क्या एविडेंस क्या साथ वहाँ पर है घटनास्थल पे। मुझे ये बताओ, ये अब अखंड प्रताप सिंह वहां कब पहुंचा? इसकी स्टेटमेंट बाद ही आया ना, कब पहुंचे तुम वहां पर? 12-17 के बाद मैं दोबारा कभी नहीं तुम गुना कब पहुंचे? गुना में पहुंचा सर जून 2019। हाँ तो ये इसके जाने के बाद स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है।
नवंबर 19 में। मेरे समक्ष नहीं हुआ ना, मेरे तो इसमें समझ नहीं आ रहा। तुम तो गुना में थे ना उस वक्त। यातायात में था सर, तो पुलिस लाइन में। ठीक है, अब जितना सवाल पूछे उतना जवाब दो, और ज्यादा हमें आंख में आंख देने की जरूरत नहीं है तुमको। समझ में आया? मिस्टर श्रीवास्तव, आफ्टर दिस स्टेटमेंट व्हाट हैपेंड? आज ये रिपोर्ट पेश की है, ब्रीफ पेश किया था, है ना। आज में उसने लिख दिया कि सोनू करावत के उन्होंने गलती की, उसके विरुद्ध कोई एविडेंस नहीं पाया गया, इसलिए उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करने में असमर्थ हैं। अब सर, जो जिसपे एलिगेशन इन्होंने लगाए 302 पे, वो इन्होंने ही फिर कह दिया कि हम नहीं कार्रवाई कर सकते। जिसपे एलिगेशन मैंने 2 रिपोर्ट में लगाए थे, वहाँ इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया नहीं। लड़की का आज भी पता नहीं कि अब हुआ क्या, क्योंकि जो उम्मीद बनी थी कि यहाँ पे 302 का केस बनते हुए कोई जांच होगी तो वो जांच यहाँ खत्म होगी, और उधर जीतू के वो बनी होगी। स्टेटमेंट पे उसके खिलाफ चालान पेश कर दिया केवल, और यहाँ पर 27 के मेमो में स्टेटमेंट आया कुछ नहीं कर रहे और ये बोलते हैं हम इसके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं मिला। नहीं कर पा रहे। ये आज पेश, दिस इज द डबल स्टैंडर्ड मेंटेन्ड। इसी केस में सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे आप, जिसमें चाहा वही सब्जेक्टिविटी आ गई ना, जिसमें चाहा उसमें चालान पेश कर दिया और जिसमें चाहा उस पे चालान पेश नहीं किया। धारा 27 का मेमो दोनों में है। एक बोलता है मेरे साथ में थी तो उसको तो चालान पेश कर दिया, एक बोलता है मैंने उसका रेप किया, उसका मर्डर किया, उसको नाले में बहाया, उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है आपके पास। ये आपका कंडक्ट है। और ये एडिशनल एसपी है, क्या नाम है तुम्हारा? एससी है बगैर। They are the persons fit to be compulsory retired by way of penalty, or to be the government can be still be more harsh while dismissing them from service. These are the black sheeps in the police department who are defaming the police establishments. Mr. Verma, you must take a call. Remove these persons with harsh penalties. They don't deserve to be in police force. क्यों नहीं किया चालान पेश तुमने? और क्यों किया तुमने चालान पेश जितेंद्र वाले केस में? कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास। ये मर्जी है, जिस केस में चाहे उसमें चालान पेश करेंगे, जो चाहेंगे नहीं करेंगे। ज्यादा संगीन अपराध तो इसका था जिसने खुद स्टेटमेंट दिया। और आज जस्टिफाई कर रहे हो यहाँ पे आकर के, पूरा अमला आके बैठा हुआ है यहाँ पे। ये हरकतें आपकी, हरकतें ही कहूंगा मैं तो इसको। ये बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी नहीं है, हरकत है आपकी। क्लियर कट 201 का ऑफेंस है तो एलिमिनेशन, डिस्ट्रॉय ऑफ एविडेंस। यस, एलिमिनेशन ऑफ एविडेंस। क्लियर कट ऑफेंस है तो। हाँ, and he was SIT member or chief. He was head of the SIT. And then you say, sir, we have constituted 5 SIT or 3 SITs? 3 SITs. ये रिजल्ट है आपके SIT का। तो थाने में क्या होता हो? अब बताओ जरा, ये अखंड प्रताप सिंह के खिलाफ बताओ क्या क्या है तुम्हारे पास? इनके खिलाफ कोई है कि इन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन की है, जो इंटायर मैंने वो जब 18 में था वहां। यस, हाँ, उसके बाद इन्होंने चालान पेश कर दिया। हाँ, तो चालान में केवल धारा 27 का मेमो आया था। हाँ। मैं लॉर्ड साहब को ये बताना चाह रहा हूँ, इन्होंने अरेस्ट ही क्यों किया जब कुछ नहीं किया इन्होंने, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। टेक नोट ऑफ दीज फैक्ट्स। अब सर उसके In one case, no steps were taken in the matter of investigation.
and challan was filed. Allegations you have heard against him. You have seen the court order sheet. You have seen the conduct of the SP, not for submitting a report of inquiry. He has not even touched the papers. And then, what was the justification of send this man again, maybe in a different office? What was the justification? What was so much of Guna was in need of such an outstanding officer? From where was he sent to Guna again? From Gwalior to Guna. Why was he sent? Let us understand this fact also. Why was he sent here? Well, there at Guna. And that too only after 6 to 7 months. Mr. Raghuvanshi, you also make note of it. On the next date, we want to hear all these facts. We must reach to a logical end, no matter how much time we spend on this case. But we are really at pains. A poor man can only lament. Where that girl would be, in what shape she would be, whether she is alive or not, we do not know. Perceive a situation as if she was our daughters. Now, what is your steps to be taken now? But so far as the statement made by the other side that we have said that there was nothing against that, that is, we have never said in our status. All said and done, you have not taken any steps against Sonu also. That Now, what are you going to do? My lord, so far as Sonu is concerned, my lord, we applied for narco test. That was rejected. Then we applied. I'm asking you what steps you want to take now. Now, my lord, so far as Sonu is concerned, my lord. How you want to go about it now? You have let off Jitendra. He got a seal of acquittal from the court of law. He is now scot-free. Sonu, you have given him the warm send-off. So far as, my lord, Jitendra is concerned, my lord, I'm not talking about anybody. Sir. I'm only concerned with the status as regards the corpus. You will come back to the point. Give me how you are going to go about to find out the corpus of the missing girl, live or dead. So far as, my lord, because that this Sonu's confession is there, my lord. You please give us status whether she is living or she is dead. Then we will start taking action. Please give us a report if she is living or she is dead. And come back. We are going to reach to a flawless logical end. Yes. Because we owe accountability towards public at large. These persons have reposed faith and trust upon us. And we as constitutional authorities owe an obligation to the public to protect them against any invasion on their personal life and liberty. My It's a lord, clear case of violation of Article 21. Clear case. And we cannot leave this case halfway. Therefore, ensure that you come back with the fact and don't try to mix up the facts. Come clear. Sir,